Good afternoon, everyone. So we start today's session. Do you remember what we discussed in the previous section? Network problem. Anyone? What did we discuss in the previous section? Yes, Saksham. Sir, may I speak? Yes, Madhav. So we discussed the importance of management and how it helps business and is it a profession as a profession? Right. We discussed management as a profession and we also discussed various levels of management. Remember? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So any doubts in that? No, sir. Okay, then today we'll start our discussion with management objectives. Tell me what are or what should be the objectives of management of any organization? To complete the task, sir, very in an organized way and in clean manner. Right, Tejas? That to benefit the society. Yes, Utkarsh, right? Anything else? So having good public relationships. Right, Gracie? Very good. Okay. What you said, these points and some others are objectives of management. We categorize the objectives of management into three main categories. First is personal objectives, means related to employees. Second category is organizational objectives related to the organization itself. And third category is social objectives related to the society. Now we'll discuss them one by one. First category, personal, or we can say personnel, or we can say employee objectives. Right? The basic highlight of these objectives is keeping the employees happy and satisfied. Because if we have happy and satisfied employees, our business will flourish. We will be very successful. So first sub-point, first objective under this category is satisfying employees' financial needs. Means providing them a reasonable salary. Reasonable किसको कहेंगे? First, जो उनकी बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करने के लिए सफिशिएंट हो, एंड सेकंड, जो उनकी ड्यूटी, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्क इन्वॉल्व इन जॉब, इंपॉर्टेंस ऑफ देयर जॉब उससे भी रिलेटेड हो. एंड ओवर एंड अबव दैट सैलरी, employees should also be given performance linked incentives. What do we mean by that? Means जिसकी जितनी अच्छी परफॉर्मेंस हो. सपोज हमने एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ एम्प्लॉइज के लिए, एक सपोज सेल्स एग्जीक्यूटिव्स के लिए हमने सबके लिए बेसिक सैलरी फिक्स कर दी 20,000 पर मंथ. ओवर एंड अबव दैट देन वी से कि जो जितनी यूनिट सेल करेगा पर यूनिट दे विल गेट 10 रुपीज एक्स्ट्रा. सो दैट इज परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव. बेसिक सैलरी से क्या होगा? उनकी बेसिक नीड्स फुलफिल होंगी. इस इंसेंटिव से क्या होगा? दे विल बी मोटिवेटेड टू परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी टू अर्न मोर इंसेंटिव्स. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Any doubt in this point? No, sir. No, sir. Okay. Then second objective under this category is satisfying social and higher level needs of employees. Now, what are these social and higher level needs? The need for friendship, the need for respect, the need for achieving one's potential. How can management do this? By providing them job satisfaction. And again, how can that be done? By providing good working conditions. Working conditions में क्या आ जाता है? हमने डिस्कस किया था. Comfortable seating, comfortable light, comfortable temperature, ठीक है, proper drinking water and proper sanitation facilities and many more. Then friendly working atmosphere where employees should be treated like a family members.
they should be given sufficient freedom to give their suggestions, to share their problems and get them resolved. Then appreciation, very important, recognition and appreciation. Whenever someone does a job well, we should give that person credit for that job. And we should appreciate good work always. Some managers think कि एम्प्लॉय ने जो काम अच्छे से किया है वो काम अच्छे से करना तो उसकी ड्यूटी है ना, अप्रिशिएट करने की क्या जरूरत है, इसी बात की तो सैलरी ले रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, लेकिन उसी सैलरी में कोई काम को ठीक ठाक सा कर रहा है, रिकॉग्निशन उसको भी मिलनी चाहिए, काम कंप्लीट हो रहा है तो, और कोई थोड़ा ज्यादा अच्छे से कर रहा है, कोई बहुत अच्छे से कर रहा है, तो जो अच्छे से कर रहे हैं उन्हें लिबरल एप्रिसिएशन देनी चाहिए. एज अ मैनेजर you don't have to even spend anything on that appreciation. You don't have to spend any money on it. You just have to say very good, well done. सबके सामने आप उसकी तारीफ करो, praise करो, and you see how much motivated that employee will be, and others also who will see that good work is being appreciated. Right now in this lockdown situation, so many doctors, nurses, other staff members of hospitals, sweepers, police personnel, personnel of other forces, they are working so hard, risking their own lives for our safety, for our comfort. तो हम अगर ये सोचें कोई बात नहीं, इसी बात की तो उन्हें सैलरी मिलती है, ये तो उनका काम ही है, that will be a very wrong thinking. We must appreciate. That is why our Prime Minister a few days back asked us to come out in our balconies and clap for them for 5 minutes. They are getting salaries for that work, yes, but they were getting those salaries even without risking their lives. Now they are even risking their lives. They are doing such a wonderful job. They are always a candidate for good appreciation, especially now. They highly deserve our appreciation. Do you agree? Yes, sir. Right. So Yes, sir. these things we need to provide to our employees. Whenever a question comes in the exam which asks you about the objective, कोई situation आपको दी और फिर पूछा which objective is it, you should mention the heading as well as subheading. For example, if I say giving proper salaries to the employees, which objective is it? The personal and employee objectives. First we will say personal objective, that is the category, and under that we will say it is satisfying employees financial needs. Okay, the objective is satisfying employees financial needs, and the category in which this objective comes is personal objectives. Clear? Yes, sir. Yes, sir. So whenever Yes, sir. you are asked about an object, any question related to management objectives, first mention the category, then the main objective, or vice versa. First the objective and then the category in which that objective comes. You have to be very careful in reading the wording of questions. I keep repeating this. अगर क्वेश्चन आपसे यही पूछे, same example, giving reasonable salaries to the staff, which category of objective is it? Yes. Then you will say it is personal objective. Category आप लिखोगे, the category is personal objective. In that category, the objective is satisfying employees' financial needs. तो category पहले आएगी, objective बाद में. Same question आपसे पूछा जाए which objective it is, तो आप पहले लिखोगे satisfying employees' financial needs. This is the objective. And then later you will write which comes under the category of personal objectives. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Good. Second category of management objectives is organizational objectives. We also call them economic objectives. Optimum utilization of physical, financial, and human resources is the highlight of these.
Now, what all objectives come under this category? Whenever you start a business, the first objective is survival. You have to survive in the market. Survive कब करोगे? जब आप reasonable profit कमा रहे होगे, अपनी cost cover कर पाओगे. अगर cost cover नहीं कर पाएंगे, लगातार losses में जाएंगे, then the firm will have to be shut down ultimately. So first objective is survival, right? And how can we survive? By keeping our customers and employees satisfied. If our employees are satisfied, if our customers are satisfied, our business will earn reasonable profits. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Next Yes, sir. objective under this category is profitability. Survive कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन survive तो अगर हम cost cover कर लें तो भी survive तो हो जाता है, लेकिन over and above that we need to earn some profit also. Owners ने जो investment की है business में, उन्हें कुछ return भी तो मिलनी चाहिए. So reasonable return should be earned on the capital invested by the owners. ठीक है? Remember, reasonable profit should be the objective, not profit maximization. Why do I say that? So because sometimes profit maximization leads to, sir, a very fast pace which the company can't even keep up to. Right. And moreover, if maximum profit becomes the aim of the management, then the management may start resorting to unfair practices, exploiting the employees, underpaying them, exploiting the customers, charging high prices or reducing the quality of the product. So that will be wrong. And ultimately, by doing that, the firm will spoil its reputation and slowly it will start incurring losses, because good employees will leave that firm, customers will stop buying products of that company. So maximum profit should never be the objective. The objective should be reasonable profit. Third, once the company is surviving, it is also earning a reasonable profit. What next? Next is growth. The management must try to grow the business further by adding more customers, by introducing our products in new markets, or maybe by introducing new product lines, right? And when the business grows, how is it measured? How do we measure the business is growing? When sales are increasing, when number of employees are increasing, and when capital investment is increasing. Clear? Yes, sir. Okay. Third category of objectives is social benefits, creation of benefits for Yes, sir. society. Now, what all objectives come under social objectives? First is environment friendly production. हम जिस भी गुड्स को कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारे मेथड ऑफ प्रोडक्शन, मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग should as far as possible be environment friendly. We should not harm the environment. Second, employment opportunities. We should try to provide employment opportunities to maximum people that we can, and especially to the underprivileged, those who belong to very poor families, those who are maybe physically challenged. So our first priority should be to provide employment opportunities to these people as long as they are fit for the job. I am not saying कि unfit है तो भी उन्हें जॉब दे दो. उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से जिस जॉब के लिए वो सूटेबल है, हम उस जॉब पे उन्हें प्लेस कर सकते हैं. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और इसके लिए एक और काम हम कर सकते हैं, जहां तक हो सके हमें कोशिश करनी चाहिए, इफ पॉसिबल वी शुड यूज लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स, ताकि ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल पाए. हमारी कंट्री में वैसे भी लेबर एबंडेंस में है, कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट की शॉर्टेज है, तो हमारी कंट्री को लेबर इंटेंसिव मॉडल ज्यादा सूट करता है, राइट?
Yes, sir. Yes, sir. Next objective under this category is providing basic amenities like schools, crèches, shelters, hospitals for the underprivileged. Clear? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. Tell me, a business firm is run to earn profits. Should they contribute in all these social areas? Why should they? Should they or should they not? Why or why not? Tell me. Sir, they should contribute in social objectives because it is their duty somehow to fulfill the social objectives, and it also brings them back goodwill. Very good. Anyone else? So, companies should initiate in social objectives because, sir, it's good for company's image and public relations. Right, very good. Okay. First reason is we as individuals also and the business firms also should contribute for social welfare. Why? Because we exist in society and we get so much from this society, so it becomes our responsibility to give back as much as we can to the society. If God has blessed us with sufficient or abundant resources, be it financial or physical in whatever manner, तो गॉड ने हमें वो रिसोर्सेज क्यों दिए हैं? ताकि हम सोसाइटी के साथ शेयर कर सकें. ये हमें समझना चाहिए. Many reputed business firms contribute regularly for the development of agriculture, industry, education, healthcare, civic amenities, etc. As these contributions are their social responsibility. ठीक है, ये तो हो गया मेन रीजन. इसके अलावा सेकेंडरी रीजन जैसे आप लोगों ने कहा, उससे कंपनी की रेपुटेशन भी इंप्रूव होगी, गुडविल भी इंप्रूव होगा, पब्लिक रिलेशंस अच्छे बने रहेंगे. ठीक है. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल एज इंडिविजुअल्स, मोस्ट ऑफ द रिलीजन्स guide or advise that everyone, whether it is an individual person or a business organization, should contribute at least 10% of their earning for social welfare. And I also believe at least 10% we all should. उससे ज्यादा कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है. बहुत लोग उससे बहुत ज्यादा भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है. बट एटलीस्ट 10% सबको सोशल वेलफेयर के लिए अपनी इनकम का, अपनी अर्निंग का स्पेंड करना चाहिए. अगर कोई बेगर हमसे कैश मांगता है तो हाँ, कैश देना ठीक नहीं लगता है, बिकॉज वी डू नॉट नो वो कैश कहाँ जाएगा. मे बी सम ऑर्गेनाइज्ड गैंग इज देयर हु आर कंपेलिंग दीज बेगर्स टू बेग, और वो पैसे इनसे छीन लेंगे एंड ऑफ द डे. तो कैश देने के बजाय इट इज बेटर कि हम उसे कुछ जरूरत की चीज दे दें. इफ सम बेगर अप्रोचेस अस एंड सेज कि ही और शी इज हंग्री, तो हमारे देश में एक बड़ी यस यस बोलो. ये किसी ने शायद डिवाइस कोई कनेक्ट है जिससे आवाज एको हो रही है. म्यूट कर दो जो डिवाइस आपने की है. हेलो या ओके. सो वी कैन प्रोवाइड देम फूड. ओके. सो इफ सम बेगर अप्रोचेस अस कि भूख लगी है, तो आप जहां पर भी हो, आप अपने व्हीकल में कुछ बिस्किट्स के स्मॉल पैकेट्स या ईटेबल आइटम्स के छोटे पैकेट्स कैरी कर सकते हो और उन्हें दे सकते हो. अगर आपके पास उस टाइम कोई चीज नहीं है, नियर बाय कोई भी ईटेबल का आपको वेंडर दिखाई दे, कोई चाय वाला आसपास दिखाई दे, उससे कुछ लेकर दे सकते हो खाने पीने को उसे. ठीक है. अगर विंटर्स में आप देखो किसी को वुलन क्लोथ्स की जरूरत है, आप पुराने वुलन क्लोथ्स अपने दे सकते हो, या आसपास किसी शॉप से कोई ब्लैंकेट या शॉल परचेज करके उन्हें दे सकते हो. दैट वी कैन डू.
right? Yes, sir. जब हम एनजीओज में भी डोनेट कर सकते हैं, बहुत सी एनजीओ सोशल वेलफेयर में काम कर रही होती हैं, बट वाइल डोनेटिंग टू एनजीओज थोड़ा सा हमें पहले इंटरनेट पे या फिजिकली जाकर वेरीफाई कर लेना चाहिए क्या वो एक्चुअली सोशल वेलफेयर कर भी रहे हैं. अगर कर रहे हैं देन वी शुड डोनेट. अदरवाइज कई ऐसे फ्रॉड एनजीओज भी खुले हुए होते हैं जो आपको कांटेक्ट करते हैं कि जी इस सोशल वेलफेयर के लिए हम काम कर रहे हैं और आप पैसे डोनेट कर दो, और एक्चुअली वो कुछ सोशल वेलफेयर नहीं कर रहे होते. तो थोड़ा सा उसकी जेन्युइननेस चेक कर लो एंड देन वी शुड कंट्रीब्यूट, राइट? Okay, sir. Now let's see some examples of Indian businessmen who regularly contribute a lot to social welfare. Social contributions of leading business personalities like Tatas, Azim Premji, Birlas, Bajaj, Wadias, Godrejs, Nadars of HCL, Srinivasan, TVS of TVS, Mahindras, Mukesh Ambani, and many others have always believed in giving back a part of their bottom line to the society at large, earmarking profits for philanthropy. If we take example of Ratan Tata, Ratan Tata is a chairman of Tata Trusts. What are these Tata Trusts? These are a group of charitable institutions managed by Tata Trusts. And Tata Trusts own 2/3, that means 67%, around 67% of Tata Sons. What is Tata Sons? Tata Sons is the holding company and promoter to all Tata Group companies. तो इस सब की समरी कंक्लूजन क्या निकली कि टाटा ग्रुप की जितनी भी वेल्थ और इनकम है उसका 67% मींस 2/3 चैरिटी में जाता है. सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स इन एजुकेशन, हेल्थ केयर, लाइवलीहुड एंड सैनिटेशन. एंड दैट इज व्हाई समटाइम्स यू माइट वंडर कि इतना बड़ा ग्रुप है टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज, फिर भी इंडियाज रिचेस्ट मैन रतन टाटा क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है. अगर ये चैरिटी वो नहीं कर रहे होते इतनी, तो ही वुड हैव बीन द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया, और एंड maybe in top 10 or 20 in the world. But why he is not? Because he is donating 67%, 2/3 of his income and wealth regularly for charity purposes. Another very good example, Azim Premji. Very similar to contribution of Ratan Tata. His contribution to philanthropy totals up more than rupees 1.45 lakh crores. Again, approximately 2/3 of his total wealth and income. That much he is spending in the field of education in the most disadvantaged parts of the country to help contribute to the improvement of quality and equity of the public schooling system. You see, so much of great work these great people are doing. Azim Premji, as we just discussed, in dollar terms, $21 billion he has contributed. Kiran Mazumdar Shaw has pledged 75% of her wealth, 3/4 of her wealth she has pledged for social welfare. Shiv Nadar, HCL wale, $558 million. Nandan and Rohini Nilekani, Infosys के co-founders थे ये. Nandan Nilekani was also the चेयरमैन ऑफ द आधार. जब वो स्टार्ट हुआ था UIDAI के चेयरमैन भी थे ये. 50% अपनी वेल्थ इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने चैरिटी के लिए प्लेज कर रखी है. देन PNC मेनन, शोभा डेवलपर्स आपने सुना होगा, कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स हैं, हैज प्रॉमिस्ड टू गिव अवे हाफ ऑफ हिज $435 million. So just imagine how much these people are contributing, and many others.
Clear? Yes, sir. Yes, sir. Now, next heading is management functions. Management process is a series of interrelated functions. कौन से functions हमने discuss किए थे पहले? First one is planning. Planning means deciding in advance कि हमारे objectives क्या होंगे, हमें क्या क्या करना है, what we have to do, when do we have to do it, where do we have to do it, how, who is to do it. Planning all this, deciding all this in advance is planning. Then next is organizing, grouping the activities to be performed and allocating them among various job positions and creating authority responsibility relations. जो भी resources चाहिए organization को, वो सारी resources arrange करना और काम को divide करना अलग अलग jobs में और departments में, that is organizing. Then allocating those job positions to suitable employees. Suitable employees को appoint करना, select करना, place करना, उन्हें training देना, that all comes under staffing. Then comes directing, giving instructions to the appointed employees कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, और instructions देने के बाद उन्हें supervise करना, lead करना, guide करना, जहां भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ हेल्प की जरूरत हो, उन्हें गाइड करना, एंड ऑल्सो मेंटेनिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन. ऑल दिस कम्स अंडर डायरेक्टिंग. क्लियर? Yes, sir. And the last but not the least, controlling, ensuring that the performance conforms to plans, ensuring that whatever we are doing is as per the plans we had made. If anything goes away, deviates from the plans, then immediately taking a corrective action to bring the performance back on the right track. Clear? Yes, sir. Any doubt? Sir. No, sir. Okay, good. Next, very important term in management is coordination. Does anyone have any idea what do we mean by coordination? So coordination means, so like we discussed the middle level of management in the last class. Yes. So it's divided among different focuses of the company or different regions of the company. So the company needs coordination between those focus groups. Right. And so it can be taken in different examples also. Yes. Okay. Just a second. Okay. Coordination is basically whenever various activities are being done together related with each other. We need synchronization in those activities, जिसे हम हिंदी में कहते हैं तालमेल. ठीक है? Similarly, when same activity is being performed by various persons at the same time in relation with each other, then again we need synchronization in those activities, talmel. This synchronization is called coordination. Clear? Yes, is sir. it clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Let's see a very short example for this. इसके पिछले भाग में मिजोरम यात्रा है.
one was the scene of a march past. Yes, sir. In Republic Day parade. Another was an orchestra playing. And these are very good examples of coordination. March past में so many soldiers are marching together. ठीक है, और उसमें कोऑर्डिनेशन कैसे आती है? सबको मालूम है सीक्वेंसिंग पहली चीज कि पहले कौन सा पैर उठाना है, फिर कौन सा, पहले कौन सी आर्म उठानी है, फिर कौन सी. दिस इज कॉल्ड सीक्वेंसिंग. अगर सीक्वेंसिंग गड़बड़ हो जाए, कोई लेफ्ट फुट पहले उठा रहा है, कोई राइट फुट, तो कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाएगी और सारा इफेक्ट स्पॉइल हो जाएगा, है ना? यस सर. फिर दूसरी चीज आती है टाइमिंग, कि कितने टाइम के लिए एक फुट को ऊपर उठाना है और वापस रखना है, कितने टाइम में. वो किससे सिंक्रोनाइज कर रहे होते हैं? ड्रम बीट से. ठीक है, अगर टाइमिंग जरा सी भी गलत हुई, मींस किसी ने एक सेकंड भी आगे पीछे अपना पैर उठाया या आर्म उठाई और रखा, तो अगेन वो बड़ा स्पॉइल हो जाएगा इफेक्ट, है ना? सो यस सर. कोऑर्डिनेशन. Similarly, in an orchestra, so many different instruments are playing at the same time, all playing the same tune, same music. लेकिन उनको पता है कौन सा म्यूजिकल नोट पहले बजाना है, फिर कौन सा, फिर कौन सा. दैट मींस सीक्वेंसिंग. फिर कौन सा, फिर कौन सा. देन टाइमिंग, कितने टाइम ड्यूरेशन में, किस स्पीड पे वो ड्यूरेशन में उन्होंने प्ले करने हैं. All this is very important for coordination, and what we get the end result is a well coordinated teamwork. Clear? Yes sir. ऑर्केस्ट्रा में एक भी इंस्ट्रूमेंट अगर आगे पीछे प्ले हुआ बाकियों से, तो पूरा इफेक्ट स्पॉइल हो जाएगा. जो इतना अच्छा म्यूजिक हमें सुनाई दे रहा है, वो सारा बेसुरा हो जाएगा. Right? So what is coordination? Yes. Now let us read. Coordination is the are you able to see the screen? Yes sir. So coordination is the orderly synchronization of efforts of individuals. Orderly synchronization मतलब तालमेल. In groups, working in groups through proper sequencing we just discussed. Timing, balancing, and integration of various activities to ensure smooth flow of work without any interruptions or confusions. It is the force that binds all management functions. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही होती हैं, and many of them are interrelated with each other. So coordination is required to ensure smooth functioning of all the activities. Clear? Yes sir. Yes sir. Okay, we stop here for now. Now anyone having any doubts can click on raise hand. Yes निखिल बोलो. सर ये नोट्स रजिस्टर में लिखने हैं? बिल्कुल लिखने हैं सर. साइड बाय साइड लिखने हैं या सर वो सारे पीडीएफ? जो जो टॉपिक हम कवर करते जा रहे हैं उसके लिखते जाओ. ओके सर. ठीक है. Any other doubt anyone? Yes, जयंत बोलो. सर नोट्स लिखने में बहुत टाइम लग जाता है, हम प्रिंट ही करा लेंगे बाद में. क्या करें फिर? जब बाद में प्रिंट ही करा लेंगे या प्रिंट ही करा लेते हैं. आपकी मर्जी है, आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, लेकिन आपकी नोटबुक का काम फिर इनकम्प्लीट रह जाएगा. एक तो दूसरा रीजन क्या होता है सर लिखने का? सुनो अब पहले. नोटबुक में लिखने का रीजन क्या होता है? जो चीज अपने हाथ के नीचे से निकल जाती है ना, वो याद रहती है ज्यादा देर तक. दैट इज द मेन पर्पस. तो लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है, आपको याद भी रहेगा, प्लस आपकी नोटबुक भी कंप्लीट रहेगी. ठीक है. ओके सर. और कोई ज्यादा काम नहीं है, आप डेली का एक एक पेज भी लिखोगे तो बहुत आराम से कंप्लीट होगा. यस सर. एनीवन एल्स? Okay, so we wind up today's meeting here.
Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.